Hello and welcome to Radiant Realization with Namrata. We deep dive into captivating conversations about life. Today I have with me Ankita. She is a health coach and she trains women to stay fit and look younger. Welcome Ankita. I am pleased to have you today. Thank you so much, Namrita, to call me, invite me with you. I am also very happy. Ankita, what got you started to become an expert in yoga and train people into fitness? See, my own condition was very miserable with lots of pain, obesity, sciatica, spondylitis, and this neck problem. My spine was very much disturbed, because of which I had to take support of someone to even stand and sit. And that was an alarming time for me to start my weight loss journey and to also work on these problems, because whether or the other, you have to work on your pain points. Otherwise, there is no end of those pain. They'll keep on increasing. So one day I decided to work on myself, and then I stood on my feet on myself and decided while seeing myself in mirror that nahi, abhi now you are a mother, you have a life to take care of, and now it is first you who will take care of her. So be firm and stand up. A wake up sign for you to look after yourself so you can look after other people. Okay. Ankita, in your experience, what it means to be fit and healthy? Yes, so in my language, fitness is something which doesn't lead to any kind of pain in your body. If there is something genetical, still you can manage that. If any accident happened to you, then you can manage that. And if there is something like genetical, like many females go through thyroid and cyst. They say ki it is genetical now, it has become genetical nowadays. Then liver problems, digestion problems, they say this is genetical. But if it is genetical, then also the particular person can take care of those problems with correct steps. Now, correct steps, usually they will start with balanced diet. For when we say balanced diet, कौन से components आने चाहिए हम लोग के diet में, so we can say that all the requirement of our body are being met. Yes, so I started with balanced diet, and they showed me result. But in between, I did a low carb diet also, and I did that for long time. And even right now, I am on that, switching with the time to balanced diet, because my need was that to follow a low carb diet, that is also called keto. And there are many misconceptions of keto, because that particular person has to go through multiple supplements if that one is on keto, on low carb diet, because this plant based food provides us multiple minerals and vitamins also, which that low carb diet doesn't provide you. So if somebody is going through keto diet with proper supplementation, that is not harmful. The purpose is only to become fit, and that purpose will solve by both the ways, but it depends on the choice of that particular person, that which way you want to follow. I followed for 3 years low carb diet, and now I wanted to follow that also, because I studied both the things and I wanted to see the difference. So I did that, because people say this is good, this is bad. So I wanted to experience that myself, and I have experienced it 3 years. So I can say ki there is no difference between, just if yes, crash diet, liquid diet, and these diets like which doesn't has any solid thing in that. Liquid is itself like goes and get digested, and crash diet has only what we say salads. Will they provide you all nutrients? No. So major components of diet, we have six actually: carbohydrate, protein, fat,
vitamin, mineral, and water. It is very important to stay hydrated. Even if somebody is exhausted and goes to have water, that time also he feels or that she feels relaxed, because it hydrates, and whatever the emotions are high feels little ki now at least I can sit because I am hydrated. Let me look after the other thing. Just sit, because at some time people are so high in sense of emotions high, or disputes are high, so they think ki only there is no one other way. But just think of it once, go through the situations, what was that, yes, analyze that. You that may not be your mistake, that may be of others, but everybody is human and humans make mistakes. So going through that, I realized that water is also very important, and there is one more important factor about water. Do not go through more than 3 liters of water. People think that more water will lead to multiple problem solving, but it is not like that also. Only have water that much your body needs. Otherwise, with every sip of water, your body will become deficient in minerals. Every sip of extra water. What happens if we have a poor diet? What was So diet that does not have all the requisite nutrients, vitamins, minerals, carbs, protein. What impact this will have on our physical and mental health? First, let me talk about physical, because whatever you're seeing right now in the market, like obesity, cancer, India is about to become cancer capital of the world, diabetes, liver problem, kidney problem, is all you seeing it very oftenly in people. Now I heard one of my client's husband, she said फैटी लिवर तो आजकल सबको है. And I was like, मेरे पास इसका I did not have any answer to it. और मैं क्या बोलूं उनको इस चीज के लिए कि it is a disease. ये एक बीमारी है. डिटेक्ट हो गई तो ठीक करो. डू नॉट फील लाइक कि ओह ये तो सबको है. I think with diabetes also people are having a similar thing that सबको ही है Yes. आजकल. And it is a chain, Namrata. It is a chain. When we eat more glucose secreting पदार्थ, that is carbs. अगर हम ज्यादा carbs खाते हैं तो हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा. ज्यादा ग्लूकोज सबसे पहले डायबिटीज करेगा, टाइप 2 डायबिटीज. डायबिटीज से आपको आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, क्योंकि जो डायबिटीज का टैबलेट है, व्हाट डज दैट डू, वो आपकी बॉडी का डायबिटीज ग्लूकोज स्टोर्स एट वन प्लेस, तो आपके ब्लड में नहीं आएगा, वो डिटेक्ट नहीं होगा, बट स्टिल दैट इज इन योर बॉडी. और फिर जब हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, देन दैट हार्ट टैबलेट विल स्टार्ट ट्रबलिंग योर किडनी, एंड जब आप किडनी का टैबलेट खाओगे, दैट किडनी tablet will start disturbing your liver. So it is a chain which actually going through. And females, what happened? Thyroid, because of high tension, because of high overthinking or every pressures that is coming on females now, they go through overthinking, and that converts into tension, and that first attack on thyroid. This is a gland which is nearer your mind, and it attacks directly here. And your thyroid goes disturbed, then your metabolism goes disturbed, then your digestion goes disturbed, then your liver goes disturbed, and it is that overall you goes disturbed, like whosoever that person is. Or if you talk about short-term problems, then that is obesity. Few females or few person faces obesity, or few males generally feel low energy. It is actually when we eat more now, we are less in energy.
And when we eat required, क्योंकि if you have heard or it मेरे ख्याल से you must have heard of it, लंच करके नींद आती है. पक्का। नींद और क्यों शादी आती में है? खाना खा के तो बहुत ही नींद आती है। ऐसा है एक्चुअली, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में बन रहा है. हमने ऐसा खाना खाया है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन वाइज सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो वो एम्प्टी कैलोरीज गई. लेकिन आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को तो भूख लगी है क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिला. अब वो तो बार बार कहते रहेंगे कि लाओ खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ. और आप जब तक वो एम्प्टी कैलोरीज देते रहोगे तो आपके ऑर्गन्स का न्यूट्रिशन तो पूरा नहीं होगा, बल्कि जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत हाई स्पाइक हो जाएगा. और फिर जब आपकी बॉडी उसे मैनेज नहीं कर पाएगी, वो या तो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आपके फैट सेल्स उसको फैट बना के स्टोर कर लेंगे, और देन यू विल फील लेजी. इसलिए खाना खाने के बाद 15 मिनट वॉक करने करने से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मैनेज हो जाता है. या फिर आप लंच डिनर करने से पहले, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद नींद नहीं आती है, लंच डिनर करने से पहले आधा घंटा 20 मिनट पहले 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले लो गुनगुने पानी में. आई टेक इट नॉर्मल पानी में विद लिटिल सॉल्ट इन दैट. मैं पिंक सॉल्ट प्रेफर करती हूँ. तो 1/4 spoon of pink salt into that, then 1 spoon of apple cider vinegar, then a glass of water, and then I now तो I feel it very tasty like आम पन्ना, because I know this is the option. This should be tried. Yes, if you'll go with salt na, 2 or 3 pinches of salt, that will taste better than without salt. What would be the role of vitamins and minerals in our health? Because lot of times when we go to doctor, they give us supplements, and those are mostly around vitamins. Yes. So vitamin minerals are very important, but required in very less quantity, less than 10 grams. ठीक है? Each of our meal is more than 50 मतलब एक simple chapati is also more than 50 grams. But if we talk about minerals and vitamins, they like calcium, we need only 1200 mg milligram. Okay, so calcium is this much, then iron is 800 mg. तो हमको सिर्फ इतना ही जरूरत है. बट ये भी जरूरत है. पहले तो अर्लियर डेज व्हाट यूज्ड टू हैपन कि हमारे प्लांट फूड से वी यूज्ड टू गेट इट ऑल. हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी. योर मदर एंड योर ग्रैंड मदर मस्ट बी मोर stronger than you, and they did not they did not even know what is calcium tablet. But now why everybody is taking, including me, I do not prefer calcium tablet, but I take multivitamin, multimineral, is because our soil, it has now become deficit in minerals because of, more cropping, more crops growing in less time. So it is, our magnesium earlier days, in 10-12 साल पहले magnesium was in full matra in our soil. But now I also take magnesium supplement because अभी वो हमारी soil में present नहीं है because of artificial cropping. So it is because it is happening this. And let me tell you the importance of, let's first talk about minerals. So magnesium. So what does it do? It relaxes your muscles throughout the day. You're working, है ना? We goes through multiple like hits. So this is also a meaning of balancing between your mind and your body. So magnesium plays that role. What does it do? It relaxes your mind. It relaxes your muscles. And when your mind muscles goes relaxed, blood circulation is in flow. Like when the body is stiff, the blood circulation can't be that much good. And when your body is relaxed, so your blood circulation flows massively, not in negative sense, but it goes fluently. And while taking magnesium at night time, you sleep better.
Like recovery of muscles goes better. Like if I count it through digital watch, so whenever I take magnesium, so my recovery of muscles, because I lift weight every day, recovery of muscle goes to 88%. And without magnesium, it is 55%, this much. Uh, Ankita, you did tell us about importance of water while we were talking. I would like to know more about what is the role of hydration in our diet, because a lot of time we hear that in when we eat dal and all, there is some portion of hydration is satisfied through dal or salad. But I would like to know from you, how should we handle water in our entire day, with food, without food? Okay. So good question, because nobody now is in now running days, so much hectic days. They, if that person is under guidance of somebody, so they goes for food, particularly on time, but they skip water. So water, see, our blood, that has water. Our joints, gel, that has water. Our saliva, that has water. Like our cells, our cell, what our cells does, they continuously taking nutrition from blood and continuously throwing extra wastage out. So that is like a transaction of nutrition and waste that also happens through water in the body. Okay. So water, what does water do? It merges the solid particle into a paste, and that paste goes to our blood, that is also more of water, and that gets dissolved, and then blood carries that paste of nutrition into our organs. What all correct times are there to take waters is like early morning, 2 glass of lukewarm water. Okay. Then in between bath or early morning water intake, you can also go once, like if you feel like, because many people go to direct take bath, they do not maintain distance. So if somebody is maintaining distance, then they can do. Then right after coming from taking bath, again, that is good time to have water. Then half an hour later, your breakfast. Okay. Then half an hour before your lunch, then again half an hour after your lunch. So what does it do कि जब भी आप एक solid intake करते हो, वो solid intake को digest होने के लिए भी पानी चाहिए. तो इसलिए हमने पहले भी लिया और इसलिए हम बाद में भी ले रहे हो. लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन जो है ना, हमारा पेट जितना है उसको इतना खाना चाहिए. अगर हमने वो खाने की जगह उस वक्त पानी भरा पेट में, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. न्यूट्रिशन आपको लगेगा पेट भर गया, फिर आपका पानी तो फटाफट से डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन खाना वो फिर क्रेव करेंगे आपके ऑर्गन्स. तो फिर आपका वो क्रेविंग्स आएगी, वो क्रेविंग्स फिर आप कुछ गलत खा के बैठोगे, फिर देन ब्लोटिंग, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे. And there's a lot of time it so happens na, when we have thali in hotels or when we go out for buffet, the portion sometimes is so large. And sometimes we have this miniature version of food where you can taste multiple items. So you just get one to eat. Sometimes the portion is very large and sometimes the portion is small, but there's a lot of variety. In this case, how do we know where do we put a full stop to what we are eating? Because वो desire तो इतना होता है ना, जो देखते हैं हर चीज खाने का मन हो जाता है. And that smells also attract us. Correct. Yes. So see, in one question you have asked 3 questions. There are 3 questions, and likewise, first of all, first question is, I go to marriage and I like to eat. Second is, I go to marriage
and I found my tasty food into that. Then I go to marriage. I do not want to have that particular item, but that smells attract me. है ना? So there is 3 ways. So let me give answers one by one. The first one is कि I do go to a wedding or party, then I am hungry and I want to eat, but this. So let me tell you कि हमें ना अपने अपने वहां पे तो बहुत सब कुछ है, but you need to first decide कि वो बहुत सब कुछ में आपको क्या खाना है. ठीक है? और ऐसा नहीं है कहीं पर भी लिखा कि you can't taste it before having that. But people, what they do, they eat without mindfuling. Eating should be mindful. There should be a mindful eating. You must know where you need to go. आप खा रहे हो because you are on cheat, good, सब कुछ खा लो. आप खा रहे हो because you do not follow any kind of diet, good, खा लो. But आप खा रहे हो and you follow good nutrition. There is a difference. Be mindful. जो आप खा रहे हो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा या फिर वो एम्प्टी कैलोरीज है, लाइक जंक फूड. मोस्ट ऑफ देम आर एम्प्टी कैलोरीज. नूडल्स में व्हाट माय डॉटर सेज, शी सेड मम्मी इट हैज लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सी आई कैन हैव इट, इट इज हेल्दी. एंड आई फील लाइक बेटा इट इज लॉट्स ऑफ रिफाइंड फ्लावर आल्सो बेटा. It is not healthy, so you can't have it. You know, the perceptions varies. If you want to taste it, you can taste it. There is, there is not any like barrier of going for portion control. But people take it like, नहीं यार मजबूरी है खाना तो. वो खुद को excuse देते हैं. So when you go to buffet, you just think कि अगर मैंने आज चीट कर लिया तो अगले 3-4 दिन आई नीड टू डिटॉक्स. और अगर मेरे को चीट नहीं करना है तो क्या क्या आइटम इनमें से ऐसी हैं जो मेरे लिस्ट में आती हैं और मैं इनको खा सकती हूँ. देन यू गो फॉर टेस्टिंग. तो आप कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर दोगे उसमें से, और जो ऑप्शंस बचेंगे यू कैन ईट देम वाइल शेयरिंग. तो पोर्शन कंट्रोल इज लाइक अभी आपकी बॉडी को 800 mg की आयरन की जरूरत है, तो वो आपकी बॉडी को उतना ही चाहिए. इससे ज्यादा मिलेगा तो बॉडी किक आउट करेगा. अगर आपकी बॉडी को 100 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज की जरूरत है फॉर एनर्जी और आपने उसमें 400 ग्राम्स ग्लूकोज डाल दिया, तो वो कब तक किक आउट करेगा? समझ रहे हो आप? मिनरल्स होते हैं, दे आर 5 कंपोनेंट्स एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2, माइक्रो एंड मैक्रो. मैक्रो में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें, जिसके खाने से हमारे बॉडी में ग्लूकोज मिलता है, बनता है, और वो ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. देन प्रोटीन. प्रोटीन खाने से हमारी मसल्स बनती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. लेकिन लोगों को कंसेप्शन ये है, मिसकंसेप्शन, कि इट इज ओनली अबाउट मसल्स. बट हमारा जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन इज इटसेल्फ अ प्रोटीन. जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांजैक्शन होती है हमारे न्यूरॉन्स में, वो भी प्रोटीन के मीडियम से होती है. जो हमारे मैसेजेस पहुंचते हैं, अब यू आर टॉकिंग, अगर आई एम अ मशीन, नॉट अ ह्यूमन बीइंग, अ परफेक्ट, आई एम अ परफेक्ट मशीन. ठीक है? बट यू आर, इफ यू आर टॉकिंग टू अ मशीन, you will see कि it has listened me, has processed my message, now giving me reply. So why this is happening so fast in us? Because this protein is playing a medium role of transaction messages. This is like not muscles में, guts में, आपके gut में neurons पाए गए हैं. These are latest studies. और न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स आर रिलेटेड टू माइंड, जो कि आपके माइंड को एक्टिव रखता है, मैसेजेस सही गलत का आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. तो जब आपके पेट में, गट में आपके न्यूरॉन्स हैं,
तो वहां भी यानी कि कोई ट्रांजेक्शन हो रही है ऑफ मैसेजेस, और वो न्यूट्रिशनल ट्रांजेक्शन नहीं होगी. And this is the difference between your well-being, your mental health, and your physical health. When you eat healthy, you get message that you have eaten healthy. It is providing all the nutrition to the body. You are not deficit. Be happy. That message goes to him. And vice versa. Correct, correct. Ankita, while having a balanced diet and ensuring that the portions are correct, whatever is the bodily requirement, what would you recommend to people who are on plant-based diet? Where can they get best source of vitamins, minerals, carbs, proteins, everything from their plant-based diet? Okay, so plant-based are rich in carbs. There you need to work on portion control. For minerals and vitamins, plant-based is rich in that. But if you go for cooking, if you go for grinding, like blending that in jar, so at that time vitamins goes away. It's better to take in form of salad. Okay, so vitamins you get from like plant-based very very easily. If you talk about like protein, then plant-based is somewhere deficit into it, but it is not like it cannot fulfill the requirement of body. It can fulfill requirement of body. See, what we eat protein while being conscious कि ये प्रोटीन है. लेकिन प्रोटीन क्यों बनता है is because of it has 20 amino acids in that. अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में जाते हैं एंड देन दे कन्वर्ट इनटू मसल्स, अगर वो पूरे 20 हैं तो. ठीक है, प्लांट बेस्ड में होता है किसी में कोई एक मिसिंग है तो किसी में कोई एक मिसिंग है, तो उसमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है. लाइक दाल में अगर मिथाइल मिसिंग है और राइस में अगर वेलिन मिसिंग है, तो बाकी ऑल्टरनेटिवली उनमें है, लाइक चावल में मिथाइल है और दाल में वेसिल है, तो आप उसको कंबाइन करके खाओगे तो यू विल गेट द कॉम्बिनेशन. एंड सेम विद दाल एंड रोटी. तो उसमें कॉम्बिनेशन वर्क करते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन में. एनिमल बेस्ड प्रोटीन में कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती है, वो आप डायरेक्टली खा सकते हो. लाइक ये सोए, इफ यू टॉक अबाउट सोए इज रिच इन प्रोटीन, उसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है. तो अगर आप न्यूट्रेला की बात करो, दैट इज सोयाबीन की बड़ियां, सो दैट इज प्रोसेस्ड. वो प्रोसेस होने के जो केमिकल उसमें लगता है, उसमें फीमेल्स की बॉडी में एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन चला जाता है, और वो एस्ट्रोजन इतना हाई हो जाता है कि बॉडी एस्ट्रोजन डोमिनेंस बन जाती है, और फिर इसके बाद इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं फीमेल में. पीसीओडी, पीसीओएस, सिस्ट, इनफर्टिलिटी, दिस गोज टू दैट. तो इसको भी यू कैन हैव वंस इन अ वीक. But portion control, if we talk about portion control, why we say every time कि portion control, it is because जितना उसको अपने ऑर्गन को काम करने के लिए जरूरत है, अगर उससे ज्यादा आपने दे दिया तो वो काम करने की पोजीशन में नहीं रहेगा. Like our mind goes bust when we get overloaded with work or overloaded with thoughts or overthinking. और अगर आपने उससे कम दिया तो टाइम खींच देगा. लेकिन जहां पे उसको लगा कि अभी मेरे को ये चाहिए, अब ये न्यूट्रिशन चाहिए, अब नहीं बन रहा है, बॉडी में भी नहीं बन रहा है, बाहर से भी नहीं मिल रहा है, तो या तो वो स्लो डाउन होना इंडिकेशन देगा, दैट विल मैसेज यू. और अगर आप वो मैसेज पे वर्क नहीं कर रहे हो, देन उसकी क्वालिटी गिरती चली जाएगी. So we have to listen to our body and the messages that body is giving. Yes, your body speaks to you, but you need to be alert every time. You need to be open कि now what it is saying today to me. Like अगर हमें भूख लगती है और हमें लगता है कि अभी तो खाना खाया है, अभी भूख क्यों लग रही है, इज बिकॉज हमारी बॉडी डेफिशिएंट है न्यूट्रिशन में. लेकिन अगर आपकी बॉडी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट नहीं है,
और आपने लाइक कुछ खाना खाया है बट वो आपको टेस्ट वाइज इज नॉट सेटिस्फाइंग यू, और आपको अभी भी भूख लगी है, या फिर आपके ऑर्गन्स को भूख लगी है, या फिर आपने अपनी क्वांटिटी मीट नहीं हुई है आपकी बॉडी की, वो आपको भूख लगी है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का कि जो आपको खाने का मन है, यू टेक दैट एंड स्मेल. Body will tell you either you want to have that or not. If you're feeling like I can't have that, that means आपको भूख नहीं लगी है. अगर if it is saying कि आज कर ले बेटा, आज कर ले, आज का एक दिन का चल जाएगा, तो it means कि आप भूखे हो. तो try to be always active to listen to your body. It indicates. Like in your experience dealing with clients, what is the most common nutritional deficiency that you've come across? Yes, so it is like in females, protein, blood, iron, hemoglobin. The most, many females are unable to even unbox the boxes. They go to other person and say, please unbox it. They are so much deficit. And unknowingly, unrealizingly, they are continuously working. If they'll come to know, then they'll not get up to work. Seriously, it is their willpower which is driving them. So protein in females and in males, like nowadays what I am hearing is liver, fatty liver, gallbladder problems. Gallbladder क्योंकि लोगों के people they got infected through gallbladders, stones हो जाते हैं and they get their gallbladder removed. फिर क्या होता है, फैट जो हमारा जो फैट डाइजेस्ट करता है वो हमारा गॉल ब्लैडर के थ्रू होता है, तो वो फैट डाइजेस्ट नहीं हुआ, या फिर आपने इतना टेक केयर नहीं करा अपनी बॉडी का कि आपकी बॉडी उसको इतनी एफिशिएंट हो जाए कि वो विदाउट गॉल ब्लैडर भी उसे डाइजेस्ट कर दे. आपने उतना टाइम ही नहीं दिया अपनी बॉडी को रिकवर करने का, और आपने उधर आप ऑपरेट करा के आए हो, और विद इन वीक और 10 days और 15 days यू हैव स्टार्टेड अगेन. यू डिड नॉट गिव टाइम टू योर बॉडी टू कोप अप विद दैट, एंड योर बॉडी इज अंडर प्रेशर. What will it do? It will not digest. Then your liver will get burdened with it. Fatty liver, protein, and there is one vitamin deficiency which is like B12, collabium. B12 females are very much deficient into it. तो these 2-3 प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, और पता है कभी भी प्रॉब्लम आएगी ना तो एक नहीं आएगी, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है आपस में. एक प्रॉब्लम आती है तो उससे दूसरी चीज ट्रिगर होती है, फिर उससे तीसरी चीज ट्रिगर होती है, और जब 3-4 ट्रिगर हो जाती है तब आपको पता चलता है अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है. देन अब जब आप सुनते हो अपनी बॉडी की, देन यू कम टू नो ये भी था, हाँ मुझे पता लग रियलाइज तो हुआ था बट आई डिडंट गिव अटेंशन टू इट. देन दे रियलाइज. And what can an individual do to address these nutritional deficiencies? First is to go for nutrition, balanced diet, consult with someone who can, according to your problems, can prescribe you simple things according to your like, dislikes, according to your problem, genetics, your medications, your emotional well-being. इस सबको देख के that person will design a nutrition for you, and workout is directly related to your mental health. Now अभी एक स्टडी हुई है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर. दिस इज अ प्रोटीन, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे माइंड में रिलीज होता है, और वो प्रोटीन आपको माइंड में रिलीज होता है, वो बॉडी में बनता है, वो किसी हमें न्यूट्रिशन सोर्स से नहीं मिलता, बॉडी में बनता है, और उससे हम हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, विच इज हमारे 4 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उसमें से एक जो उस टाइम रिलीज होता है इज एंडोर्फिन. जब हम वर्कआउट करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है, प्रोटीन होता है वो ब्रेन ड्राइव न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर,
triggers are endorphin, and then on endorphins आपको हैप्पी बनाता है, आपकी स्लीप बेटर करता है, then you are willing to explore more, and then these three things gives you result in weight reduction or healthier body or something good efficiency gives you, then your dopamine gets released, and dopamine also a happy hormone, and serotonin release when your hormones goes managed. जब आपके hormones manage होते हैं तो serotonin release होता है. This is also one of your 4 happy hormones. And when these 3 hormones are triggered, oxytocin doesn't have any other option to get triggered. It has to get triggered. Workout will keep you happy from inside. So workout diet is for giving nutrition to your body plus mind, and workout gives first that particular time only when you work out, hits your happy hormones, and then slowly and gradually your body also start feeling that. And Virat, so today, for all of us have so many things to do, right? इतना busy lifestyle हो जाता है. Then how can we plan our meal? So we are that's hormones are there with us. We are happy. Our body is healthy. तो क्या thought process डालना चाहिए वो meal planning exercise? Everybody says yeah, stress is normal. Then what is happening? That has become normal. When you start saying happiness is normal, then happiness will become normal. And you are saying जिस तरीके से एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को, एक हेल्थ इशू दूसरे हेल्थ इशू को ट्रिगर करती है ना नम्रता, उसी तरीके से जब हम एक एक्शन लेंगे ना, एक स्टेप लेंगे ना अपनी हेल्थ के लिए, तो वो when you will feel happy, तो you will be eager to take second step. And this only happened with me. At that time when I was not in condition of working out on myself completely, I just started with taking one step. I went to my nutritionist and I burst out, and she said, take your time, move slowly, but keep moving. You know, this is floor, जैसे basement होता है, then ground floor, then first floor, then second floor. So be at one stage at time. जब आप उसको लेके comfortable हो जाओगे, then opt for second option, then opt for third option, and by that time you'll reach to take third option, you will be very much habitual of taking those prior actions, basement, first floor, and second floor. They will be inbuilt, and you will keep on piling new, and that will become your lifestyle. And if somebody will say, यार आज खा ले, आज छोड़ दे, तो you क्यों छोड़ दूं यार? तू आज हेल्दी खा ले, तू आज मेरे साथ जिम चल, तू आज मेरे साथ योगा कर ले. You give, अगर सामने वाला is giving you option, you also give option. I loved this conversation, Ankita. This is going to stay with me. Thank you so much. So I think this first step is just go with hydration. जब भी आपको लग रहा है कि मुझे क्रेविंग हो रही है, खाना खा लिया मैंने, क्रेविंग हो रही है, तो यू गो विद हाइड्रेशन. उसमें थोड़ा सा नमक डाल के यू हैव इट, उससे क्रेविंग आपकी रिजॉल्व हो जाती है. देन यू हैव काढ़ा. काढ़ा वो तो आपकी हेल्थ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना, तो टेक काढ़ा. उसको आप टेस्टी भी बना सकते हो. उसमें मिंट लीव्स, तुलसा लीव्स डाल करके, उसमें नींबू, तेज पत्ता, उसको ये सब डाल के पकाओ. दैट विल इवन टेस्ट बेटर ऑल्सो. उसमें थोड़ा सा पत्ती डालो, देन जिंजर ग्राइंड इनटू दैट, तो वो टेस्टी बना लो ना. दिस इज व्हाट, क्या होता है ना, जब हम अनटेस्टी खाना खाते रहते हैं ना, तो हम सेटिस्फाई नहीं होते. इट इज वेरी मच सिमिलर लाइक कि जब हम जाते हैं शादी में, सबसे पहले कॉफी पीते हैं और हमारा टंग जल जाता है, फिर हमारे कुछ खाने का स्वाद नहीं आता. इट डजंट मीन कि अगर कोई डाइट पे है तो सबसे पहले जाके कॉफी पी ले. इट मीन्स कि आप हेल्थी खाना खाओ बट टेस्टी खाना खाओ, कि आपको लगे कि मैं भी इंसान हूँ, जी रहा हूँ, मशीन नहीं हूँ कि मुझे बैटरी लगाई और मैं फुल हो गया तो देन अगेन आई एम ऑन वर्क. तो स्टार्ट विद हाइड्रेशन,
Then with hydration, what you can do, you can go for more salads. सैलेड पे आप उसको जो भी चाट मसाला या कुछ भी डालना है सैलेड्स पे, पहले सैलेड का बाउल खा लो स्टार्टिंग में. ग्रेजुअली तो यू विल बी एबल टू मैनेज योर मील एंड सैलेड साइमल्टेनियसली, बट स्टार्टिंग में यू हैव योर सैलेड फर्स्ट, ठीक है, एंड देन गो फॉर प्रोटीन. प्रोटीन यानी कि दाल, फाइबर यानी कि सब्जी, वो खाओ. देन राइस एंड चपाती शुड बी द लास्ट ऑप्शन. व्हेन यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट, तो थोड़ा बहुत इसके साथ योगा, वॉक स्टार्ट करो. जब आपको लगेगा कि अभी ये सब तो मैं कर पा रहा हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन टेक अनदर एक्शन. वेट लिफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स की बॉडी में वो हार्मोन ही नहीं है जो मसल्स बिल्ड कर दें. जैसे टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन जो मेल्स को प्रोड्यूस हो जाता है एट द एज ऑफ 16 और 17, जो कि ऑटोमेटिकली बॉडी में मसल्स बिल्ड कर देता है. लेकिन फीमेल्स की बॉडी में वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है. तो उसके लिए उनको वेट उठाने की जरूरत है टू ट्रेन मसल्स. तो तभी वो और बनेगी. एंड देन यू नीड टू टेक न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू दैट, सो टू build them more, and that is your immunity also. If you are very much complete with your muscles, then your immunity is strong. And Ankita, I think this is the wave which is going on where people are going for sugar-free, low sugar consumptions, and there are a lot of sugar alternatives. So in our body, what is the minimum requirement of sugar? Okay. So our body doesn't require additional sugar. Because whatever carbohydrates we are eating, they goes developed into glucose in our body. What does sugar do? That also goes develop into our body. Goes develop into glucose in our body. तो जितना हम प्लांट सोर्स पे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी. देन एडिशनल शुगर, चीनी, has no space until or unless you make space. Nutrition doesn't allow your body to make space with direct sugar, with direct glucose, because that doesn't get digested, just get converted into glucose, and other your carbohydrate get digested, then release sugar, glucose. So there are, yes, sugar free is good, not that tablet wala sugar free. There is one meethi tulsi concept. Meethi tulsi, that is stevia leaves. Okay, so you can go for stevia leaves or stevia liquid or stevia powder. So they are alternative of sugars, but erythritol or all these जो भी last में tol लिखा हुआ है, they are directly or indirectly related to alcohol. So in spite of those halls, go with stevia leaves, stevia powder or stevia liquid. Requirements differs. जब आप जाते हो, you go out somewhere, तो you need to have drops in your bag. तो requirement varies, option varies, but product should be the specific. Okay. And intermittent fasting, which is a word I hear most of the time because sedentary lifestyle hai, you're not exercising a lot. I would like to know your views on intermittent fasting. See, it is not like कि अगर आप intermittent fasting करोगे नहीं तो it will be a trouble. ऐसा नहीं है. लेकिन अगर आप करते हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड. कि आप देखो कि हमारे कल्चर में फास्टिंग का कॉन्सेप्ट हर रिलीजन में है. अभी तो भी अलाउ कि नहीं नहीं पूजा कर ली, चाय पी लो, फल खा लो, ठीक है, खीर खा लो, मखाने खा लो, क्या आलू खा लो. अभी तो ये सब कॉन्सेप्ट आ गया है, बट अर्लियर ऑन फास्ट यूज्ड टू बी अ फास्ट काइंड ऑफ थिंग. नाउ इट इज नॉट फास्ट. So these intermittent fasting is from early time in our concept, but is not going
in proper implementation now. So these concepts had to come. Intermittent had to come. So what does it do? Water intake is very important into that. ठीक है? When रोजा में तो they do not even take water. So what and go for this study जो Central Asia है, Central East Asia, जहाँ पे जितनी भी countries हैं like Saudi, like these countries, Kuwait वगैरह, they are very much less in heart problems because they go through these kind of fast, their Ramzan twice a year. So their body gets filtered. जब हम अपनी बॉडी में कुछ अलग नहीं डालते हैं जिसको प्रोसेस करने की जरूरत है, तो हमारी बॉडी खुद ही अपने ब्लडर को प्रोसेस करती है, क्लटर को, और विद यूज ऑफ वाटर दैट गोज आउट ऑफ आवर बॉडी. और इसको एक कॉन्सेप्ट है ऑटोफिजी, इस पे बहुत किताबें भी लिखी गई हैं. ऑटोफिजी इज व्हाट इट इज कि जैसे मैं भी फास्ट मैं फास्ट करती हूँ या फिर मैं डाइट पे भी रहती हूँ, देन ऑल्सो आई गो फॉर 24 hours का फास्ट इन विच आई टेक ओनली वाटर और ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी. सो व्हाट डज इट डू कि हम केवल अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए कर रहे हैं फॉर 24 hours ओनली, ऐसा नहीं है उसकी आदत डाल रहे हैं हम, ताकि हमारी बॉडी में जितने भी डेड सेल्स हैं, क्लटर जमा हो गया. अब मैं आई एम ऑन डाइट कंटिन्यूअसली, तो वो क्लटर तो जमा नहीं हो रहा है, बट स्टिल डेड सेल्स हैं बॉडी में. ऑर्गन्स में भी हैं वो डेड सेल्स, मसल्स में भी हैं, वेन्स में भी हैं, तो नेल्स में भी हैं, हेयर्स में भी हैं. तो वो डेड सेल्स बॉडी से निकालने के लिए वी गो फॉर ऑटोफिजी, जिसमें कि 20 से 24 आवर का फास्ट रखना होता है. तो दैट इज दिस इज कॉल्ड फास्टिंग. कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू, लेकिन अगर किसी को करना है तो पहले वो 12 आवर्स का करे, देन वो 14 आवर्स का करे, देन वो 16 आवर्स का करे, देन वो 18 आवर्स का करे, और अपनी बॉडी को पहले यूज टू बनाए. यस, कॉन्सेप्ट इज गोइंग, और बहुत सारे बड़े बड़े कोचेस सेज कि ये तो सिर्फ ट्रेंड है, ट्रेंड आता है. जैसे पहले हर्बल चला था, अब ऑर्गेनिक चल रहा है, दोनों का मतलब एक ही है. दीज आर ट्रेंड, ठीक है. तो दीज आर ट्रेंड, लेकिन व्हाट मेरा इसको डिफेंड करने का मतलब सिर्फ इतना है कि फास्टिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू टू आवर कल्चर इन इंडिया और इन अदर कंट्रीज. फास्टिंग करने का फास्टिंग करने का मतलब यही है कि आप अपने ऑर्गन्स को रिलैक्स दो कुछ समय के लिए, गिव दैट. अब पहले समय में तो पीपल यूज टू स्टार्व फॉर फूड, दे डिड नॉट हैव मतलब they did not have food even to satisfy their desire. Now people are dying out of more food. Yes. So this concept is very much needed for them, ताकि वो कहीं तो रुके. Yes. And Ankita, one thing what I've observed as a friend, you speak and all. Many times people are on diet, but they are not able to experience weight loss. Sometimes people eat normal and still they are able to experience weight loss. So what is the relation between diet and weight loss? Yes. So ऐसा होता है, बहुत से लोग आते हैं, और मेरे साथ अभी तक एक ही क्लाइंट हुआ है ऐसा कि उनको इनिशियली अच्छा वेट लॉस हुआ, एंड देन शी हैड टू गो फॉर फंक्शन, एंड व्हेन शी मतलब केम बैक फ्रॉम दैट, so she could able to reduce 4-5 kgs. She wasn't able to go for more. It is very much related to disorders of your body. First, either that need medication or maybe that need proper nutrition. If I am on that kind of, if I fall in that kind of category, likewise I need to first fix those problems either with nutrition or with medication. First need to analyze that what is the problem. Then स्ट्रेस लेवल्स, अगर आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल इज एट पीक, तो वो आपके डाइजेशन को नॉर्मल नहीं होने देगा, वो आपका डाइजेशन नहीं होने देगा. और जब तक डाइजेशन नहीं होगा तब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बॉडी को, और बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी वेट नहीं छोड़ेगी, एक्स्ट्रा फैट नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल बहुत टाइट से चिपका हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा फैट वो छोड़ेगा ही नहीं.
और वो कॉर्टिजोल क्या करता है, वो हमारे जो मेटाबॉलिज्म के जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है ना, उसको स्टिक हो जाता है जाके। और जब वो उसको स्टिक रहता है तो दैट डजंट अलाउ आवर डाइजेशन सिस्टम टू गो इन फ्लो। एंड समथिंग अदर ऑल्सो हैपेंस लाइक जेनेटिकल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्टिल उनका वेट नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे किसी का होता है एप्पल शेप बॉडी होता है, किसी का पियर शेप बॉडी होता है। एप्पल शेप बॉडी इज जब किसी का टमी बेली एरिया बल्की होता है, और पियर शेप बॉडी इज जब किसी का लोअर बॉडी हैवी होता है लाइक हिप्स और थाइस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो जेनेटिकल। कितना भी वो काम कर ले उस चीज के ऊपर, लेकिन उनका वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट प्रॉपर कट में नहीं आ पाता, थोड़ा बहुत बल्कि रहता ही है। लाइक माई बॉडी इज पियर शेप बॉडी। अभी आई बी एबल टू वेयर 26 size of jeans, but I need to take stretchable stuff to wear 26 size. And for comfortable, then I need to go for 28 to feel comfortable in thighs. So this is pear shaped body and this is in my genetics. Earlier on, I used to criticize it, ये कैसे जाएगा, but now I have accepted it. It is something which I got from my ancestors, so I should be happy with it. Agreed, agreed. अंकिता, आपने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि जब भी स्ट्रेस होता है बॉडी में, so it does not absorb all the nutrients which is there in our food. Yes. So also I would like to know, does stress impact our choice of food? When we are under stress, we would eat specific food, and under normal condition, or we prefer eating different food. Okay. So when our stress hormone is at spike, your organs crave for sugar. And when you will intake sugar, that is empty calories. वो कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, कुछ समय के लिए आपको लगेगा पेट भर गया, लेकिन जैसे ही वो डाइजेस्ट होगा, एकदम से आपके शुगर लेवल स्पाइक होंगे, आपके ग्लूकोज लेवल स्पाइक होगा। जैसे ही ग्लूकोज स्पाइक जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी वो बैठ जाएगा, और जैसे ही आपके ग्लूकोज लेवल बैठेंगे, देन यू विल अगेन स्टार्ट क्रेविंग, और तब भी आपको मीठा ही चाहिए। तो दिस क्रेविंग्स हैपन विद 2 रीजन, जब आप एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हो, और सेकेंड इज जब आपके ऑर्गन्स क्रेव कर रहे हैं, व्हेन यू आर इनटू हाई स्टेज ऑफ cortisol spike, you crave for sugar. And a smart person is that who can tweak the mind with what? Ki just flip the thought, because it is like mind needs to be in our control, but it is not. And when it is not and we are trying to take it in our control, we need to tweak it with few thoughts, or maybe few words like all is well. Very good concept. ठीक है, जब भी मन हम करते हैं ना, बच्चों के साथ हम करते हैं बट हम अपने साथ भूल जाते हैं। जब बच्चा रोता है, जब अभी माय डॉटर गॉट हर्ट, अभी खेलते खेलते शी गॉट हर्ट, तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ सम अदर डे जब शी हैड फन, देन हर मूड सडनली स्टार्टेड चेंजिंग। तो बट वी डू नॉट डू इट विद आवरसेल्फ। Okay, yes. So we need to think of that day which was best day of our life. It happens with me when I feel low now, so I think of that visualization which was best in my life. Because I visualize and everybody wants to have best in their life, so I also want to have, and I attract that. And when I feel happiest after visualization, I feel this is the sense of complete. And I write that day, I make multiple rituals, I say thank you again, and then खुशी खुशी में मैं उस दिन फास्ट रख लेती हूँ। बहुत अच्छा। अंकिता, मुझे एक चीज which I noticed is usually evening times में there is this desire to eat chaat masala, chaat puri and all, and तभी अगर कहीं पे दिख गया तो खुद को रोकना बहुत डिफिकल्ट होता है। Why does this happen? Like, why during evening we crave for that food, and how do we stop ourselves? Okay, so it is all psychological. जब आप Okay. डाइट पे आ जाते हो तो इट डजंट कम,
लेकिन वाह। उस स्टेज तक आने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी सिंगल प्लेट ऑफ पारी पूरी विल नॉट मेक यू फैट, ठीक है। अब अगर आप वंस इन अ वाइल 15 दिन में, महीना भर में यू आर गोइंग टू हैव दैट, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक यू फैट। बट चॉइसेस कि आपको उसमें मीठा चाहिए, देन आपको उसमें आलू चाहिए, देन आपको उसमें फ्राई वाला भी चाहिए, तो दैट इज गोइंग टू हार्म यू, ठीक है। फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड इज यू आस्क योर सेल्फ ना कि आपको सिर्फ मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, दिस इज इम्पोर्टेंट और दैट इज इम्पोर्टेंट, विच इज अदर साइड ऑफ रियलिटी इज न्यूट्रिशन। कि या फिर अगर आपको इतना मन करता है तो 1 or 2 मस्ट बी सेटिस्फाइंग यू, मोर देन दैट यू नो अब ये दिस विल बिकम स्लो पॉइजन फॉर मी, ठीक है। तो अभी हम इधर वी कैन ट्विक इट विद कि अभी तो खाया था ना, एंड देन कम होम, देन टेक एंटी क्रेविंग ड्रिंक्स like salt water, apple cider vinegar, then kadha. These things will remove your, and there are few more masalas which will stop your cravings, like जीरा मसाला, roasted जीरा मसाला। और कुछ आप घर पे भी बना सकते हो, आपके दालों से या आपके स्पाइसेस से या फिर आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होते हैं उनसे, तो ये यू कैन मेक इट एट होम। तो I suggest my clients to carry this dabba of masala whenever they feel like having something which is just empty and will not give you any nutrition value. Take that and keep on your tongue. You will feel more satisfied than that. क्योंकि you whenever this is a ritual. जब आप ये ritual करते हो, you realize कि you doing it, it means itself कि you prioritizing your health first. And if you are not doing it, तो means कि like this is secondary for you. And I am very blessed to have clients like कि अगर मैंने बोला है कि आपको 2 चम्मच चावल खाना है तो they eat only 2 चम्मच चावल। Wow. Yes, I have such clients. Because I ask them for meal pictures, so sometime I do not tell them before. I call them or I message them while having their meal, and I ask them to send me picture. These few things I think everybody does with their clients, because they do want to know their efforts. They want to know ki how my hard work, my contribution calculation is working, and with how is it working with the calculation or with the habits of my client. So it works, and likewise I am very blessed. Nice. Ankita, thank you so much for sharing all your insights on what goes in having a healthy diet, how to stop ourselves, how to identify cravings, and how to stay healthy. Thank you so much, Ankita. My pleasure. You called me, you invited me. This is like like a very happier thing, which I feel like somebody is inviting you, is like that person wants to have you.